Hello class 10. Today we are going to discuss what is the difference when we surmount a solid shape on another solid shape and what difference will it create when we just remove or form a cavity of one solid shape from the another. Okay, so in case of volume, if we are just adding two shapes one over the other, then in that case we will just add for finding the volume. And if we form a cavity from one shape, one cavity is formed, then in that case, if we have to find the volume, then we will just subtract. But this is a complete different case when we have to find the surface area. Okay, so let's read the question. It says cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have, and find the surface area of the solid. Now just find the two shapes we are going to discuss in this question. One is the cubical block and other is the hemisphere. So one is cube and other is hemisphere. We are discussing these two shapes. Clear? It is saying the block, cubical block is having a side 7 centimeter. So basically edge of the cube you can represent with A is 7 centimeter. Now hemisphere, in case of hemisphere we actually want radius, but that is not given in this case because they said what is the greatest diameter of the hemisphere this hemisphere can have. तो अब यहाँ पे मुझे इसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस। So this is a cubical block. Okay, this is a cubical block. On this cubical block, I have just surmounted one of the hemisphere. This hemisphere. तो देखिए ये क्यूब है, ये हेमिस्फीयर है। तो अब ये वाला जो हेमिस्फीयर है, डू यू थिंक वी कैन जस्ट अरेंज मोर डायामीटर? यस यू कैन। ओके, तो क्योंकि मेरा जो क्यूब का एज है मैं लाइक उतना डायामीटर तक इसको ले जा सकती हूँ। तो लेट्स चेंज दिस विद अनदर हेमिस्फीयर। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स ट्राई वन अनदर। ओके, नाउ लुक। सो दिस इज द हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमिस्फीयर ऑन द क्यूब। अब देखो ये वाला जो क्यूब है ये हेमिस्फीयर है, तो इट इज जस्ट टचिंग द बाउंड्री, इट इज जस्ट टचिंग द बाउंड्री। तो greatest diameter the hemisphere can have is actually the length or the edge. So diameter can be equal to edge of the cube, edge of the cube. Clear? देखा ना आपने, हमने यहाँ पे अभी छोटा हेमिस्फीयर रखा था, बट मैक्सिमम अब इससे बड़ा अगर मैं रखूंगी हेमिस्फीयर इट विल मूव आउट ऑफ द एज। तो अगर मेरे क्यूब का एज इतना बड़ा होगा ही नहीं तो उसमें उससे ऊपर उतना बड़ा मैं हेमिस्फीयर नहीं रख पाऊंगी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल गया, diameter of the cube. So dia of the hemisphere is equal to 7 centimeter. And if dia is 7 centimeter, then what is the radius? It is 7 by 2 centimeter. The radius is 7 by 2 centimeter. अब मेरे पास दोनों जो शेप्स थी उन दोनों का सरफेस एरिया काउंट करने के लिए मुझे जो जो वेरिएबल्स चाहिए थे मेरे पास आ चुके हैं। अब इसने पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हम लोग अब इसमें फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब आप यहाँ पे कभी कभी जो ज्यादातर मैं फील करती हूँ बच्चे क्या करते हैं, दे विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दे विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, देन जस्ट ऐड, नो नॉट एट ऑल। सो प्लीज ध्यान रखिए, जब मैंने यहाँ पे हेमिस्फीयर के ऊपर हेमिस्फीयर को एक क्यूब के ऊपर लगाया इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब लेट्स काउंट द सरफेसेस वी हैव। सो वी आर हैविंग वन ऑफ द सरफेस is this, then this, then this, then this and the bottom। तो 5 surfaces हमारे पास हैं, बट ये जो 6th surface है, 6th surface इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पे अगर आप 5 surfaces काउंट करके फिर कोई कारीगरी करेंगे that is also correct, but the easiest way what can I say, जहाँ पे आपके ये हेमिस्फीयर का बेस और ये जो क्यूब का बेस है ये दोनों आपस में जब टच होंगे तो देयर इज वन ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर व्हिच इज एक्चुअली कवरिंग द सर्कुलर बेस ऑफ दिस क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे काम कर रही हूँ। दिस इज टीएसए ऑफ क्यूब। फर्स्टली आई विल टेक टीएसए ऑफ क्यूब। मैंने इसके सारे सरफेसेस काउंट किए इस क्यूब के।
उसके बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक हेमिस्फीयर पैक कर दिया, दिस हेमिस्फीयर। अगर मैं हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर रही हूँ, इट इज ऑल्सो गिविंग वन ऑफ द सरफेस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द CSA ऑफ द क्यूब हेमिस्फीयर। दिस इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अब यहाँ पे अब ये जो बेस, ये देखिए, ये जो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर है, इट इज एक्चुअली obstructing the base same area on the cube. तो ये वाला जो surface है, actually this is not the total surface of this is not forming the total surface। और एक चीज आपको और मैंने सिखाई हुई है, अगर हमें टोटल सरफेस काउंट करने होते हैं ना, तो उस केस में यू हैव टू थिंक how many area or how many surfaces are there in which you can paint। Okay, so I can paint actually the CSA of the hemisphere also। Can you see these black portion that I made for you? So these portion can be painted as well। तो उसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि ये जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, मैंने TSA ऑफ क्यूब में इस सरफेस को पूरा काउंट किया है, पूरा काउंट किया है। जबकि अब जब मैं इसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा दे रही हूँ, तो जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो उसके साथ टच कर रहा है, और मैं उसको पेंट नहीं कर पाऊंगी। दैट विल नॉट एक्चुअली क्रिएट दी surface area of the solid। So we will just put the formula CSA of cube, bolo bolo bolo, yeah, this is 6a square plus CSA of hemisphere, yes, you are correct, 2 pi r square। Now what is the base area of the hemisphere? This is a circle, yeah, circle circle circle, pi r square, clear? So it is 6a square plus pi r square, 6a square plus pi r square। So this is the easiest way in which you can actually find the total surface area of the solid which is given in this question। Now we can just put the values। So 6a square का मतलब है 7 square plus pi को हम लिख सकते हैं 22/7 into r square को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 into 7/2। Sometimes students actually divide 7 by 2 to get 3.5, but this is not giving us any benefit. This is just actually adding our calculation। So we believe in simplicity। जब तक आप मैथ्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आप मैथ्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज 6 इंटू 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, प्लस this is 11 into 7, 77 upon 2। So in this question, actually, I just want to save your rough work that you can actually make your time for future questions। So 6 nines are 54, 5, 24, 29। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई भी रफ कम साइड पे नहीं किया, क्योंकि सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन यू कैन डायरेक्टली डू इन द सेम place। Now 77 by 2, तो 2 3s are, then 2 8s are plus 0.5। अब इन दोनों को मुझे जस्ट ऐड करना है, तो 5 2 3 3 332.5 centimeter square, because we are talking about the area, so it is a square unit, and the length, or you can say edge of the cube was given as 7 centimeter। That's why it is centimeter square। So our final answer of this question, in which we are finding surface area of the solid, is 332.5 centimeter square। In the next question, a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। Determine the surface area of the remaining solid। अब यहाँ पे आप इस शेप को ध्यान से देखो, बट जब हम इसको पेपर पे देखते हैं, we are not actually able to relate। So let's do it in the practical question। So this is my cube। ठीक, अब इसने बोला एक क्यूब में से आपको यहाँ पे से हेमिस्फेरिकल कैविटी बनानी है। ये देखिए हेमिस्फेरिकल कैविटी हमने बना दी। अब हमें ये जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका TS से काउंट करना है, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड व्हेन वी जस्ट फाइंड द फॉर्मूला फॉर द सेम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। सो वी आर हैविंग टू शेप्स, वन इज आर हेमिस्फीयर and other is our cube। clear, other is our cube। अब इसने बोला हेमिस्फीयर और क्यूब में as such इसने बोला diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। So as I am going to relate it with the previous question in which the edge of the cube was given to be 7 centimeters, so I am taking the same numeric।
अब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, दैट हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना आपका एज ऑफ द क्यूब होगा, मैं इससे बड़ा हेमिस्फीयर इसमें से कैसे कैविटी कैसे बनाऊंगी, कैसे मैं उसको बाहर निकालूंगी। एंड द रेडियस इन दिस केस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जनरली स्टूडेंट्स परसेप्शन जो होता है टीएसए देखकर टीएसए ऑफ क्यूब प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, बट नो, दैट इज नॉट करेक्ट। इन दिस केस वी आर हैविंग टीएसए ऑफ क्यूब, बट द टॉप base area of the hemisphere is actually not here. Can you paint this top area? No, you can't. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इसको कैसे डील करना होगा? TSA of Q प्लस, अब देखो यहाँ पे जब मैंने कैविटी क्रिएट की, तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में डू यू थिंक यू कैन पेंट, because we have to find the area exposed to air or the area that which can be painted। तो देखो यहाँ पे मैं पेंट कर पा रही हूँ। yes, you can paint it। ये जो आपका अंदर का सरफेस है, you can paint it। so this is CSA of हेमिस्फीयर। ठीक, बट एक चीज का ध्यान दो, जब मैंने ये कैविटी क्रिएट की, तो ये जो बेस एरिया ऑफ द क्यूब हेमिस्फीयर था वो रिमूव हो गया। तो यहाँ से मुझे माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी तो करना होगा। सो दिस इज TSA of cube 6 square। You are going to surprise, please ready। So this is 2 pi r square minus base area pi r square। Yes, yes, yes। So this is 6a square plus pi r square। Oh my god! In the previous question, let me show you the previous slide. Here we also find the same area. This, look, बट इन दिस केस इट वॉज सरमाउंटेड, मतलब हमने ऊपर डाला था। और इन दिस क्वेश्चन वी हैव जस्ट रिमूव्ड द cavity, so we are having the same formula in this case। so no doubt we will get the same answer once we calculate। so I hope this helps you, because generally क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं यार हमने कैविटी बनाया है तो सरफेस एरिया कम हो गया, और हमने ऊपर से डाला है, सरमाउंट किया है, तो सरफेस एरिया ऐड हो गया। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को अगर हम एक और तरीके से समझना चाहें, जहां पे मुझे उसका क्या काउंट करना होगा, वॉल्यूम, तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को अब मैं वॉल्यूम से अगर आपको समझाऊंगी, तो देखिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत मेजर डिफरेंस इसके अंदर हमारे पास नहीं आने वाला। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको हम ब्लैक कलर से एक बार साइड पे ले लेते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वॉल्यूम विल बी डिफरेंट, नॉट द सेम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, a क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मैंने क्यूब के ऊपर सरमाउंट किया। बट अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है इन केस व्हेन आई हैव जस्ट मेड द कैविटी, तो इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किस चीज का हमारा होगा, टोटल जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट है, दैट इज क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस volume of hemisphere। So just feel the difference, absorb it, and let me know if it was of any help to you। Thank you, thank you, thank you so much, bacha।